All those people who don't have the practice book, please mention it in the group, okay? And I'll get you the practice book. So guys, answer the questions. And a lot of excitement I can see in the students. Perhaps it is about tomorrow, I don't know. They're having a lot of conversation there. Okay, concentrate now on the text, guys. My perfect weekend. You read the text? There are lots of simple sentences. Easy, one subject, one verb sentence, okay? Let's look at this. Question number 1. What is Miranda Hart's job? She's an actor, right? Or actress. Some people don't mind calling girls actor now. They say, why have two different words? It's the same profession. So they say actor. Please comment. We have a chair here as well, by the way, next to Inaya. You want to be Inaya's partner today? What is Miranda Hart's job? She is an actor or actress. In the past, people said actress is the feminine gender of actor. But there is a movement today. They say, why have different words for men and women? The same word is enough. So Priyanka Chopra says in an interview, I am an actor. She says, I'm an actor. Okay. All right. So Miranda Hart is an actor or actress, if you prefer, no problems. But in exam, if they ask you the feminine gender of actor, then you should know it is actress. Okay, she's an actor or actress and a comedian. Is she married? No. Is she married? Are you sure? Which sentence tells you that she's not married? Most single women I know want a boyfriend, but I love being on my own. Okay, she is also a single woman, but she doesn't want a boyfriend. She loves being on her own. She is not interested in having a partner. She says, I'm happy alone. Okay, good. She is single. Now, part 2. Read the article carefully and answer the questions. Number 1. What time does she get home on Friday evening? Very good. So we can understand from this question, what time, kitne baje, does she get? Does she get? कुछ लोग को लगता है does एक word है, वो अकेले आता है. Does अकेले नहीं आता है question में. Does जब आता है तो अपने साथ तबाही लाता है. Sorry, अपने साथ verb 1 लाता है. क्या लाता है? Verb 1 लाता है. मैंने वाइफ के बारे में बोल दिया. जब वो आती है तो अपने साथ. Okay. All right. Does she get home? Does she get home? Does she get? हाँ, does और get जो है पेयर है एक तरह से. यही हमेशा देखना हो. जहां does आएगा उसके बाद subject होगा और subject के बाद हर हाल में V1 होना चाहिए. और नहीं है तो गलत यूज हो गया does. राइट? और जब जवाब देंगे तो सब्जेक्ट बोलेंगे she gets. does और get साथ में आके बन जाएंगे gets. She gets home at 6:15. On Friday evening, she gets home at 6:15. Any confusion, anyone? 2. What does she have to drink? Again we say does. Does अपने आप में अकेले नहीं होता. दिखता है एक वर्ड लेकिन वो है नहीं अकेले. तो ऐसे समझ लो कि कोई एक लड़का है, तुम उसको अकेले समझ रहे हो, तुमने 2 थप्पड़ मार दिया, उसके आसपास बैठे हैं उसके दोस्त सब, ठीक, वो दिख रहा है अकेले. तो डज अकेले दिखता है, वो होता नहीं अकेले, वो 2 लोग के साथ होता है. कौन दोनों? सब्जेक्ट V1 हमेशा. तो डज को अकेले मत देखा करो. लुक एट डज विद इट्स ग्रुप. डज शी हैव. हैव इज द V1.
So we'll answer she has. Does और have साथ में आ जाएंगे और has बन जाएगा. Does और have साथ में आ जाएंगे क्वेश्चन वाले, और जब जवाब देंगे तो बोलेंगे she has hot chocolate to drink. Number 3, what does she stay? देखना शुरू कर रहे हैं. Does she stay, does subject she, V1 stay. Does she stay in London for the weekend? वो लंदन में रहती है क्या? No, she doesn't. She goes out of London, near the sea, right? Okay. Number 4, does she like driving? She does, but not in a lot of traffic. Nobody likes driving in a lot of traffic. Not in rush hours. Not in rush hours. Number 5, who does she go with? फिर से does she go. हर बार ऐसे ही क्वेश्चन में आता है. does होगा तो उसके बाद सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद V1. Does she go? जब आंसर करेंगे she goes with her dog. The name is Peggy. What are her favorite things? देखो यहाँ does नहीं है क्योंकि आपके पास V1 भी नहीं है. What are her favorite things? She likes looking at the stars. We too, I think I also like looking at the stars. It's amazing. And she likes talking to her dog. Why? Because the dog listens, doesn't answer back. Number 3, look at Miranda's answers and complete the questions. Number 1, what time do you go to bed on Friday night? What time do you go to bed on Friday night? At 10. Now, it is obvious that we are asking the questions of Miranda. We are talking to Miranda. Miranda, what time do you go to bed on Friday night? Then she says at 10. 2. Miranda, what time do you get up on Saturday morning? अब do you चल रहा है क्योंकि subject you है, he, she नहीं. In exercise 2, the questions were about her, she. तो does. अभी subject है you. तो अब हम बोल रहे हैं do. What time do you go to bed? What time do you get up on Saturday morning? At 8 o'clock. Number 3, in a cafe. Where do you go for breakfast? Or where do you have breakfast? बेटा go बोलेंगे ना तो preposition का problem होता है. सुनो समझो. If you say where do you go for breakfast, then the answer will be to a cafe. What will be the answer? Because the question is where do you go? Where do you go? तो जवाब देंगे to a cafe. Right? But अगर question हो where do you have lunch? Where do you have breakfast? So in a cafe. So the answer is in a cafe. Understand a small difference here. So where do you have breakfast? Where do you have breakfast? अगर go लगा दोगे where do you go to have breakfast या for breakfast तो answer देना पड़ेगा to a cafe. Where do you go to learn English? To STC. Where do you go to learn English? To STC. Where do you learn English? In STC, at STC. That's another thing, okay? Where do you learn English? In STC, at STC. But to STC तो नहीं बोलोगे. But where do you go to learn English? To STC. So what a small minor difference, but important, okay? Number 4. What do you do after breakfast? What do you do after breakfast? I do some exercises. I do some exercises. What do you do after breakfast? I do some exercises. 5.
Where? Next to the sea. Where do you go for a long walk? Where do you go for a long walk? Answer is, I go next to the sea. All right. And then exercise 4. On Saturday evening, Miranda reads a book. यहाँ read नहीं बोल सकते. Miranda, she reads a book. Miranda खुद बोलेंगी, on Saturday evening, I read a book. But we will say she reads a book. Number 2, she doesn't have a television. She doesn't have a television. वो बोलेंगे, I don't have a television. All right. Is she poor? She has a car, she has a cottage next to the sea, and she has a boat. Okay. She has so many things. She's not poor, but she doesn't have a TV because long time ago in her family, a crisis happened, a tragedy happened. A TV fell on her grandfather's father's head and he died. Then the whole family decided, we will never have a TV. This is our revenge against TV because the TV killed our grandfather. That's the story. Okay. Yeah. All right. Because she doesn't like watching TV, right? Then you say, sir, why does she watch TV for 1 hour on Friday evening? She doesn't really like watching TV. I'll tell you, when I read the text, I'll explain. She doesn't like watching TV. Okay, I'll tell you. Number 3, on Sunday morning, she listens to music. On Sunday morning, she listens to music. She listens to music. 4, she goes for a long walk. 5, she has lunch in a pub. She has lunch in a pub. 6, she leaves the cottage, Leaves. She leaves the cottage at 5. She leaves the cottage at 5. And 7, on Monday morning, she doesn't want to. She doesn't want to go back to work. She doesn't want to go back to work. I think it's just like us. On Monday morning, students don't want to go back to school. After Sunday, there's a... I remember my time. Monday was the worst day to go to school. I mean, we never felt like going to school. We never wanted to go back to school on Monday morning. But we had to. There was no choice. And in case sometimes we convinced mommy to stay at home, we decided that, okay, we'll stay. And mommy said, all right. Then Tuesday was even more difficult because after 2 days away from school, we didn't really feel like going back. The longer we stayed at home, the more difficult it was to go back to school. We were afraid of the teacher's reaction, one, and there was a sense of, I will say, discomfort, uneasiness, because we were staying at home. After 4, 5, 6 days, so many times, 2, 3 days, we just didn't go because aaj nahi, kal se, and this felt strange. So I know that feeling even today. I still remember that feeling. So when any children behave that way in front of me, I know what they're feeling. They're feeling a sense of uneasiness. They need comfort. They need somebody to support them. They need somebody who will say, don't worry, I'll come with you to school and I'll talk to your teacher. Don't worry. Because they feel कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा 2-3 दिन बाद जा रहे हैं, Do you remember this when you were young? I had this feeling and I remember. I think one good thing about myself is I have not forgotten my childhood and my childhood thinking, stupidity, all that, because I can relate to the children very easily because I remember how I used to be. Okay. Moving on. On Monday morning, she doesn't want to go back to work. And 8, she works with nice people. She works with nice people. Her colleagues are nice. She works with nice people. Her colleagues are nice. Yeah. I want you guys, first of all, please practice part 2 and 3 with a partner. Part 2 and 3. There are questions. You guys will ask, your partner will answer. Okay. Practice. I'll give you 5 minutes and then we will read the text together. Guys, go ahead. Start asking and answering the questions with a partner.
All right. I think Ayat, you need to come here with your sister Inaya, please. Yeah, come. Or shall I call you Aitu? That's what your mummy calls you, right? Yeah. All right, sit. Come on, everybody. Yes, you too. Abhinav is absent today. Okay. Uh-huh. Okay, include Inayat, sorry, Inayat, no. Sadakat. Yeah. In your pair, yes, please. Yeah. Uh, Shams beta, practice with Rudra Bhaiya. Okay. Which question, beta? Number two. What does she have to drink? She makes a hot chocolate. It means, what does she have? क्या पीती है ना? What does she have to drink? So she drinks hot chocolate. Okay. Yes, beta. I guess now we are ready to read the text together. Okay, people, let's read. Did you find anything difficult so far in the question answers? Let's look at the text. Most single women I know want a boyfriend. Most single women I know want a boyfriend. Now, what does this sentence mean in Hindi? How do you translate it into Hindi? Most single women I know want a boyfriend. Go ahead. First of all, Rudra will translate. Rudra, translate this sentence. Most single women I know want a boyfriend. Zyadatar, most single women I know want a boyfriend. Only this part. Beta, you give it a try. Translate it into Hindi. But no, don't go there. I don't want that part. I only want the Hindi of this part. Most single women I know want a boyfriend. Beta, you translated it nicely. You said ज़्यादातर औरतें single औरतें boyfriend चाहती हैं. But there is a phrase part I know. You ignored that part. Why? So please use that part as well and answer. Most single women I know want a boyfriend. चाहती है. When somebody says Mapara, you listen to me. When somebody says मुझे पता है ज्यादातर सिंगल औरतें बॉयफ्रेंड चाहते हैं, मुझे पता है से स्टार्ट करोगे, then your sentence in English will also start with I know. But this sentence doesn't start with I know. And in English, the word order matters. So, Afia, would you like to translate? Most single women I know want a boyfriend. लोग कहते हैं आपकी वोकैबुलरी कमजोर है इसलिए आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. सेम मिस्टेक. अगर आप ऐसे बोलोगे, मैं जानती हूं कि ज्यादातर सिंगल औरतें बॉयफ्रेंड चाहती, कैसे बोलना होगा इंग्लिश में? आई नो दैट मोस्ट सिंगल वुमेन वांट ए बॉयफ्रेंड. लेकिन ये लिखा है क्या? क्या लिखा है? मोस्ट सिंगल वुमेन आई नो वांट ए बॉयफ्रेंड. ओके. Anybody else wants to give it a try? Deepak or anybody? Mahapara, would you like to try to translate this sentence into Hindi? Good. All right. That's exactly what it means. Most single women I know want a boyfriend. तो आई नो को आप अगर लगाओगे ऐसे, मैं जानती हूं, तो आप गड़बड़ा जाओगे. आपको समझना होगा. Most single women I know don't take advantage of being clever, okay? Understand? Yes. Most single women I know want a boyfriend. It means ज्यादा सिंगल औरतें जिन्हें मैं जानती हूँ want a boyfriend. ठीक है? अब सुनिए. ज्यादातर टीचर्स जिन्हें मैं जानता हूं.
अपने स्टूडेंट्स की बेहतरी के लिए काम करते हैं. मोस्ट टीचर्स आई नो वर्क टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स, वर्क टू इम्प्रूव देयर स्टूडेंट्स. आसान सेंटेंस बोलते हैं. मोस्ट पेरेंट्स आई नो लव देयर चिल्ड्रन. मोस्ट पेरेंट्स आई नो लव देयर चिल्ड्रन. मतलब मोस्ट पेरेंट्स आई नो, ज्यादातर पेरेंट्स जिन्हें मैं, ऑलराइट, मोस्ट पेरेंट्स आई नो लव देयर चिल्ड्रन. हु लव्स देयर चिल्ड्रन? विच पेरेंट्स? विच मोस्ट पेरेंट्स? जिन्हें, अब जरा सुनना, अगर मैं कहूं ज्यादातर बच्चे, स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स, तो मैं आपकी बात कर रहा हूं या पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं? ज्यादातर स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, राइट? तो मैंने आपकी बात की या सब लोगों की बात की? अब सुनिएगा. मोस्ट स्टूडेंट्स आई हैव रिस्पेक्ट मी. मोस्ट स्टूडेंट्स आई हैव रिस्पेक्ट मी. मोस्ट स्टूडेंट्स आई हैव, अब किसकी बात हो रही है? आप लोगों की बात हो रही है अब, है ना? मोस्ट स्टूडेंट्स आई हैव रिस्पेक्ट मी, राइट? तो आप ये आई हैव लगा करके ये स्टूडेंट्स या पेरेंट्स को एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. किस ग्रुप की बात कर रहे हो आप? जरा सुनना. मोस्ट पीपल आई नो, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा मैं जिनको नहीं जानता, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्हें मैं, राइट. मोस्ट चिल्ड्रन आई नो, ज्यादातर बच्चे जिन्हें मैं जानता हूं, उनके बारे में कोई बात बोलनी है मुझे, तो मोस्ट चिल्ड्रन आई नो और उसके बाद आगे. लेकिन अगर मैं सीधे बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ, सारे बच्चों के बारे में, ठीक है, तो मैं बोलूंगा मोस्ट चिल्ड्रन, ऑलराइट, मोस्ट चिल्ड्रन. सुनिएगा. मोस्ट फ्रेंड्स आई हैव आर इन जॉब. मोस्ट फ्रेंड्स आई हैव आर इन जॉब. तो मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स जॉब में हैं, आपको पता चल गया ना? और मैंने इसको कैसे बोला? मोस्ट फ्रेंड्स आई हैव आर इन जॉब. एक इजी सेंटेंस. मोस्ट शर्ट्स आई हैव आर ब्लैक. मोस्ट शर्ट्स आई हैव आर ब्लैक. अब बोलो. बढ़िया, आपने अच्छा किया. सारे लोग मेरे सेंटेंस को दोहराइए. Most shirts I have are black. What is black? Which shirts? My shirt. Shirts that I have, right? Okay, fine. So would you like to make a statement about your clothes, just like I made a sentence? Most shirts I have are black. Now, your sentence about your clothes. Yes. हाँ. पहला word. पहला word. Most. दूसरा word. Shirts, clothes. Okay. तीसरा word. Most pens you have are black. Okay. Talk about your clothes, guys. Most jeans you have are black. Okay. Go ahead, everybody. Okay. And most clothes I have are not very expensive. Most clothes I have are not very expensive. Only some clothes I have are a little expensive. Most clothes I have are not expensive. Go on. Give me an example from your life about your clothes. Very good. Nakabs. All right. Go on. Plural. Hmm. Yes. Talk about your clothes. Yes. Hmm. Most relatives I have, most relatives I have do not speak English. Most relatives I have do not speak English. Go on. Talk about yourself. Make a similar sentence.
Most friends you have don't speak English. Okay, fine. Share the address of this institute with them. Okay. All right. Let's continue. Very good sentence, Rudra. Everybody remember, can you repeat what Rudra said? Most friends Rudra has, again, don't, friends, plural. Most friends Rudra has don't speak English. इसका मतलब ये गंवार लोग के साथ रहता है लड़का. Just kidding. Just kidding. Okay. Go on. Very good sentence, Rudra. Next people. Come on. Make a similar sentence, everybody. Inaya, make a sentence about your toys. Most toys I have are my sisters. वो बड़ी है ना, तो उसके टॉयज इसको मिल गए होंगे. मेरे पास जो ज्यादातर टॉय है वो मेरी बहन के हैं एक्चुअली. No, no. Okay. So she doesn't play with the toys you play with. Okay. Because she's older than you. Or she says, no, it is your toy. I don't want to play with it. हाँ, लड़की वाली चीजें इसको पसंद है. खुद को भी लड़का बोलती है. Because she's papa's favorite and your mummy's favorite, right? Your mummy's favorite or papa's favorite? Papa's favorite. Seriously. And she's also papa's favorite. Mummy doesn't have a favorite daughter. Okay, mummy is waiting for a son, maybe. Huh? Okay, next, guys. Come on, give me an example. Most neighbors you have are good. मम्मी पूछती है तुम्हारी कि मेरा बेटा कैसा है पढ़ने में. बोल देना कि बेटा आपका बहुत अच्छा है पढ़ने में. ऑलराइट बेटा, आज बोल देना जाके कि सर ऐसे सिखाए, इतने सारे लोग थे, दूसरे तीसरे नंबर पे मैंने ये वाला सेंटेंस एकदम मार दिया छक्का. क्या बोला है बच्चा? मोस्ट नेबर्स आई हैव आर गुड. वाओ, लवली अदनान, वेरी गुड, यू आर अ क्लेवर बॉय. कीप गोइंग गाइस, कम ऑन. What a fantastic sentence. Yes. Keep going. Don't hesitate. There is nothing to hesitate. Okay. Yes. Keep going. Yes, the brace. Sajid. Come on. Shlok beta. Rishabh. क्या बात है. ओ माय गॉड. गाइस, आप हंस रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं. ये सेंटेंस लिख के तुम टीचर्स के पास लेके जाओ. ओके. 10 में 7 8 टीचर्स कहते हैं गलत बोल दिया तुमने, क्योंकि उनकी समझ नहीं है. वेल डन. सुपर. रिपीट द सेंटेंस. जस्ट फॉलो द वर्ड्स. Most friends Sajid has, most friends Sajid has have girlfriends, but Sajid doesn't. Okay. He's looking for one. He's looking for one. Most friends you have girlfriends, right? कोई लिखा देखेगा कहेगा दो दो बार हैव क्यों लिख दिया है, राइट? क्योंकि उसको इंटोनेशन तो समझ में आएगी नहीं. तुम पढ़ना नहीं, खाली लिख के दे देना ऐसे. मोस्ट फ्रेंड्स आई हैव गर्लफ्रेंड्स. ऑलराइट. और उसके बाद देखना कि लोग क्या कहते हैं उस सेंटेंस का. कहेंगे ये दो दो बार हैव क्यों लिख दिया है, गलती हो गई तुमसे, 2 बार हैव क्यों लिखे हो. ऑलराइट, कीप गोइंग. फैंटास्टिक, वेरी गुड एग्जांपल. गो ऑन. Oh, really? Afridi has poor friends, poor people as friends. He says most friends he has are poor. Wow. Either you have a big heart or you like showing off your money. One of the two things. If either he has a big heart, he doesn't care whether his friends are poor. Okay. He likes making friends with all those people. Second thing could be he makes friends with poor people so that he can show that I am rich. Just joking again. Go on, people. Very good sentence, beta. Very good sentence. Keep going. Most बेटा इसमें आप वो सब्जेक्ट वर्ब वाला आइडिया जो था वो इग्नोर कर दिए. हमने ऑफ से नहीं बोला था. दीपक बेटा, remember what Sajid said. Most friends he has
are, have girlfriends. Most friends Afridi has are poor. Rudra said, most friends he has don't speak English. This guy said, most friends, neighbors he has are nice, are nice. तो आपने ये वाला अरेंजमेंट नहीं किया, जो बोला वो अलग है बेटा. ग्रामेटिकली दोनों का पैटर्न एक नहीं है. पैटर्न मैच कराइए बेटा. Pay attention to the pattern. Yes, go on, Mudassir. Afia, Ashfi, go on. Everybody, I want a sentence from all of you. Yes, Rishabh, Shashi, go on. बहुत बढ़िया. एक खाली गलती है. देखो, जब आपके दोस्त ने कहा मोस्ट नेबर्स आई हैव आर नाइस, मोस्ट शर्ट्स आई हैव आर ब्लैक, तो सब्जेक्ट है. हाँ हाँ हाँ. You corrected yourself. Your mind is working so fast now. First time you made a mistake, but before I corrected your sentence, you realized what the mistake was and you corrected yourself. That's amazing. If you make a mistake and realize what the mistake is and correct yourself, it shows that you are a thinking person and you learn fast. Very good. Good job. Most friends Rishabh has study Sanskrit. Very good. Most glasses, beta, glasses. Glasses. Goggles mat bolna. Goggles word is used when you're talking about protective gears, like skiing करते समय goggles पहनते हैं, उसको skiing goggles कहते हैं. Swimming करते समय पहनते हैं चश्मा special type का, swimming goggles. Okay? So goggles are for protection of your eyes in a certain activity. In a certain, and usually the goggles get their name from the activity. Swimming goggles are different from skiing goggles. All right. Are different from welding goggles. All right. I hope you understand. So these are simply glasses. Most glasses you have, now you realized what is expensive? Most glasses you have. Most glasses you have are expensive. Very good. Very nice. Most friends you have don't drink alcohol, and your voice is so high quality, if you do, yeah, Tabrez's voice, when he speaks, it sounds like somebody who is a big celebrity speaking. He's got a beautiful voice. If you decide one day to do a podcast on YouTube, you will be so successful because your voice is nice. Now you need to find a niche, a subject that you want to discuss, or you can be an interviewer like Beer Bishops, you have a beautiful voice, Tabrez. Go on, people. Most friends Tabrez has don't drink alcohol. Very good. Some friends Tabrez has drink alcohol, okay? Because most friends he has don't drink alcohol. But if he wants to say koi nahi, then he will say all friends I have do not, or none of my friends drink alcohol. No friends. कैसे बोलेंगे? No friends I have drink alcohol. क्या? No friends I have drink alcohol. No friends. Okay? कोई भी नहीं. No friends I have drink alcohol. Okay? Good. Most का मतलब होता है ज्यादातर, है ना? इसका मतलब समझिएगा. Okay. I said most relatives I have don't speak English. It means some relatives I have who speak English. Yes, they do. All friends you have play cricket. Very good. Most hairs nahi, hair. Okay, I have is white. Hair is uncountable. So is. Most hair I have is white. Absolutely. I'm very proud of my white hair. Okay. एक गलती है बेटा. सब गौर कर रहे हैं. Most mobile phones you have. How many phones do you have?
Normally people have one, but he's saying most phones he has are expensive. If I say most wives I have, तो इसका मतलब क्या हुआ? I have more than one, right? I have multiple wives. 3 4 5 होंगी. All right. तब मैंने कहा most wives I have. चलो फिर किसी पे बिल फाड़ देते हैं यहाँ पे. Okay, रुको. Most girlfriends Afridi has. Okay, most girlfriends Afridi has are uneducated. All right, poor boy. All right. Most girlfriends he has are uneducated. Yes. All right. तो ऐसी बातें बोलने पर आप एक कंक्लूजन निकालेंगे. Oh, he has more than one. Okay. Keep going. Some more? Some more? Anybody? Most friends you have play chess. Wow, very nice. He has intelligent friends, guys. Because only intelligent people can play chess. Chess is not an easy game. You have to understand a lot of things. So usually people who play chess have a high IQ. Okay. Do you have a sentence? आपका फर्स्ट डे है, प्रेशर नहीं डालना चाहता, लेकिन अगर आपके पास है तो वेरी नाइस. मोस्ट बाइक्स ही हैज आर, मतलब हिंदी में सेकेंड हैंड है. सेकेंड हैंड है, पुराने मॉडल्स के हैं. ओके. मोस्ट बाइक्स ही हैज आर ओल्ड मॉडल. मोस्ट बाइक्स ही हैज आर ओल्ड मॉडल. इसका मतलब ही हैज more multiple bikes, 3 4 bikes, not bikes. Okay, bikes. Yes, sorry. Okay. Most bikes he has are old model. Very nice. Good. आप बहुत तेजी से सीख गए, हाँ? Very good. First day and he made an example. Okay. Nikita, Zara, come on, you can try. हाँ. Most friends you have गाना गाती हैं, है ना? ठीक है. उसमें आर क्यों चाहिए बेटा? आर नहीं चाहिए ना, गाना गाना, सिंग. ओके. मोस्ट फ्रेंड्स यू हैव कैन सिंग. उनको गाना गाना आता है, राइट बेटा? ऐसे बोलेंगे. मोस्ट फ्रेंड्स निकिता हैज, अफरीदी अफरीदी, मोस्ट फ्रेंड्स निकिता हैज कैन सिंग. हाँ, उन लोगों को गाना गाना आता है. मोस्ट फ्रेंड्स निकिता हैज कैन सिंग. कुछ लोग को ना ये सेंटेंस लिख के दोगे तो कहेंगे गलत है, हैज के बाद कैन है, क्या सेंटेंस है ये? ठीक है, उनको इंटोनेशन का एहसास नहीं है कि आप कितना अच्छा सेंटेंस बनाए हो. Can sing. Who can sing? Most friends Nikita has. Who can sing? Most friends Nikita has. Can sing. निकिता के जितने दोस्त हैं ज्यादातर गाना गाना जानते हैं. Can sing. All right. Very good. Rajlakshmi, your sentence? Yes, Shlok beta. Most friends you have play football. Playing नहीं बोलना बेटा. Play football. ज्यादातर जो आपके दोस्त हैं फुटबॉल खेलते हैं. कोलकाता के दोस्त हैं आपके ज्यादातर, नहीं? या तो झूठा सेंटेंस है. Really? People in Bihar play football? Okay. All right. Okay. Huh? Can you believe it? Football on mobile. Wow. Okay. Very good, Shlok. Very good. Most friends Shlok has play football. Okay. And you, Shlok? तो आप कहेंगे बट आई डोंट. याद है उसने कहा था माई कजन्स लाइक सनबेदिंग बट आई डोंट. तो क्या बोलेंगे? मोस्ट फ्रेंड्स आई हैव प्ले फुटबॉल बट आई डोंट. मोस्ट फ्रेंड्स यू हैव लाइक क्रिकेट. ओके, वेरी गुड अदनान. Yesterday I talked to your mother. She is always concerned about you. You know, she worries about you. कि मेरा बच्चा पढ़ाई कैसा कर रहा है सर, प्लीज ध्यान दीजिए. मैं क्या बोलूं उनको?
मैं बस इतना ही बोल सकता हूं कि बच्चा बहुत क्लेवर है, लेकिन भाई एक बात बताओ, क्लेवर बच्चों को कैसे गार्जियन और टीचर्स चाहिए, साधारण या बेहतर? अगर उनको पोटेंशियल हासिल करना, अपना पूरा रियलाइज करना है कि हम क्या कर सकते हैं, तो बेटा आपको एक चीज अवॉइड करना है, गली में जाना। क्योंकि गली में जो है ना, लड़के जो है ना, वो गाली देना सिखाएंगे और कुछ नहीं सिखाएंगे। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, आई नो अदनान, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आपका जो दिमाग है, आप 11 साल के हो, राइट? 10 और 11 और 12, राइट? आप में बहुत क्षमता है बेटा। आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व द वे यू लर्न थिंग्स, आप जितनी तेजी से कैच करते हो, यू आर वेरी क्लेवर। बस यही है कि वो टाइम सही डायरेक्शन में जाए आपका, यू कैन अचीव बिग थिंग्स। आई डोंट नो, Bihar Sharif needs a good hostel. A hostel where young children like Adnan can can be kept with a lot of care, and they can be given the right guidance. I really feel Bihar Sharif needs a good hostel. After 11-12 years of age, आप लोग घर पे रह के कुछ फायदा नहीं कर पाओगे। मम्मी का प्यार मिल गया, 5, 6, 7, 8, 9 में मिल गया मम्मी का प्यार, उसके बाद घर पे रहने का कोई फायदा नहीं आप जैसे बच्चों के लिए। You are not going to benefit from being at home. There are a lot of parents, they love their children, but they cannot contribute to their children's learning, or I will say improvement in their personality. They can't contribute much. It's better that children live with some professionals who guide them all the time. And again, when I'm talking about a hostel, I'm talking of a hostel where the warden and the teachers who stay in the hostel are all experts in their fields, ताकि बच्चे पूरा पूरा आगे बढ़ सके। Maybe someday I need a building. I know a lot of people who can contribute. मेरे खुद के स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे स्मार्ट हैं जो पता है उनको, वो लीक से हट के सोचते हैं। एक है स्कूल का पढ़ाई बेटा, एकदम लीक पे चलता है, ऐसे लिखवा दो सबको, सब याद कर लो, हो गया। लेकिन कुछ लोग को पता है ये कितना खराब चीज है, ऐसे लिखवा देना। ओके, तो if anybody has a nice building जहां hostel चल सकता है, okay, or if you have friends who have a nice building, so we can think of starting a hostel, okay? And like I said, my own students under my guidance can play a good role, in taking care of these children there. और वहां पर 5-6 साल वाले बच्चे नहीं रहेंगे जिनको सुसु करना सिखाना पड़ेगा, राइट? रात में 10 plus, those who have crossed 10, 10, 11, 12, because we can really really help them. अगर अदनान मेरे साथ रहेगा ना हर समय, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, उसकी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, everything, he will be a bright student. He is already a very sharp minded guy, that's why I'm saying this. He just needs to be with the right people to be motivated in the right direction. Keep going. Arham, you know he's such a talented guy. मैं सब एक की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि दूसरे नहीं है, they're all clever. अरे बेटा, where are you? आपका भांजा है ये, he is sharper than you बेटा। इसका दिमाग जो है ना तेज चलता है, बहुत तेज चलता है। अगर इसको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा तो ये इसका फायदा नहीं ले पाएगा, ये तेज दिमाग का। ऑलराइट, सो पीपल लाइक हिम, दे रियली नीड गाइडेंस। All right, let's continue. Some more examples, anybody? Sadakat beta, you haven't given any examples yet. बेटा मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स मेरे सेंटेंस में नहीं था। याद करिए, मेरा पैटर्न जो था उसमें मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स था, नहीं ना था? वो आदत इसकी पड़ी हुई है आपको, दीपक आपको ही पड़ी हुई है, इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके इस पैटर्न को सीखिए। क्या था बेटा? मोस्ट फ्रेंड्स आई हैव, मोस्ट फ्रेंड्स यू हैव, ड्राइव फियरलेसली, roughly, okay, carelessly, roughly, okay, okay, yes, they're heavy drivers. That's okay, but driving carelessly on the road can be fatal, can put your life at risk. Keep going. Anybody else? You guys will of course practice lots of sentences at home. Yeah, you can talk about your relatives, your neighbors, your clothes, anything, or your friends' relatives.
आप बोल सकते हैं आई हैव अ फ्रेंड एक्स वाई जेड, मोस्ट रिलेटिव्स ही हैज आर डॉक्टर्स, है ना, उसके ज्यादातर रिलेटिव्स डॉक्टर्स हैं. ओके, सो यू गाइस कैन राइट several sentences in the group. Okay, so don't forget to practice. Let's move on. It was a really fruitful. जरा बेटा, आपको तो बोलना ही पड़ेगा एक सेंटेंस, है ना. एक सेंटेंस बोलिए बेटा. आप हिंदी में बोल सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा. ओके. Most clothes I have are black tops. Okay, आप ऐसे ही बोल सकते हैं. Most tops I have are black. ज्यादातर जो टॉप्स हैं मेरे वो ब्लैक हैं. Most tops I have are black. Okay, very good. Very good, Arham. What a sentence he made. Most teachers Arham has are nice. ये इसकी ओपिनियन हुई ना अपने टीचर्स के बारे में कि मेरे टीचर्स अच्छे हैं. इसने कहा most teachers I have are nice. Very good, Arham. Very good. Okay. Now, Harsh, do you have a sentence? I know it's a difficult structure for you. कुछ कुछ आ रहा है दिमाग में? नहीं आ रहा है तो खाली अरहम का सेंटेंस दोहरा दो कि मोस्ट टीचर्स अरहम हैज आर नाइस. हैज आर नाइस यानी ज्यादातर इनके जो टीचर्स हैं अच्छे हैं. ठीक है, इनकी राय है कि इनके टीचर्स अच्छे हैं. वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस. ऑलराइट, मोस्ट स्टूडेंट्स बिहार हैज. ओके, हालांकि इसमें हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जगह मोस्ट स्टूडेंट्स इन बिहार करके आगे बढ़ सकते हैं. मोस्ट स्टूडेंट्स इन बिहार करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ठीक है, इट्स ओके. मोस्ट यूनिवर्सिटीज बिहार हैज और मोस्ट यूनिवर्सिटीज इन बिहार. ओके, ऑलराइट, कर सकते हैं ऐसे. फाइन. ऑलराइट, सो आर वी रेडी टू मूव ऑन फ्रॉम हियर? Okay. Most single women I know want a boyfriend. अब जब ये लाइन पढ़ रहे हो आप तो कैसा महसूस होता है? पहले जैसा या अलग? Most single women I know want a boyfriend. अब पढ़ो तो ये लाइन को दोस्तों. Most single women I know want a boyfriend. अब पहले जैसा फील हो रहा है या अलग फील हो रहा है? अब महसूस हो रहा है कि लिखा है कि ज्यादातर सिंगल औरतें जिन्हें मैं जानती हूँ, ये आपको महसूस हो रहा है क्योंकि आप सबने सेंटेंसेस बनाए. तो कई बार हम लैंग्वेज को मिसअंडरस्टैंड करते हैं. मैथ्स में दो बातें होती हैं, समझ में नहीं आता है या तो समझ में आता है. यहां पर है पता नहीं चलता है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. लगता है कि समझ में आ रहा है. आफिया, आपको लग रहा था वो लिखा है ना कि मैं जानती हूँ ज्यादातर औरतें, लेकिन क्या लिखा है? ज्यादातर औरतें जिन्हें. और आपने भी सेंटेंस बनाए फिर. मोस्ट क्लासेस यू हैव, राइट. जरा सुनना. मोस्ट स्टूडेंट्स आई टीच. Most students I teach enjoy learning English. Most students I teach enjoy learning English. मैंने क्या बोला? टीच और एंजॉय एक साथ रखा, किसी किसी का दिमाग घूम जाएगा, लेकिन आपका नहीं घूमना चाहिए. मोस्ट स्टूडेंट्स आई टीच enjoy learning English. ज्यादातर स्टूडेंट्स जिन्हें हम पढ़ाते हैं इंग्लिश सीखने को इंजॉय करते हैं. वो प्रेशर नहीं लेते, वो इंजॉय करते हैं इंग्लिश सीखने को. मोस्ट स्टूडेंट्स आई टीच, यहाँ आई टीच की जगह आई हैव भी बोलते तो बात वही है. मोस्ट स्टूडेंट्स आई हैव enjoy learning English. Right? Easy? Okay. Most dishes my mother cooks are tasty. Most dishes my mother cooks are tasty. What is tasty? है ना. अच्छा, चलिए एक सेंटेंस निकिता के लिए. आप लोगों को तो पता है, बिना निकिता के बारे में बोले मेरा पेट नहीं भरता. ओके, तो और वो भी सेंटेंस किसके बारे में होने वाला है? एनी गेसेस गाइस? Oh, her husband, right. Okay. Most gifts Nikita's husband gives her are cheap. Oh, now expensive. वो खुद बोलेंगी, वो खुद बोलेंगी. निकिता, आप बताओ कि ज्यादातर गिफ्ट जो आपके हस्बैंड देते हैं सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं? पर सर, गिफ्ट देते ही नहीं है सर.
ओके, कैसे बोलेंगे? मोस्ट गिफ्ट्स निकिता's husband gives her are, ये आर गिफ्ट्स के लिए बोल रहे हैं, द गिफ्ट्स आर एक्सपेंसिव। ज्यादातर गिफ्ट्स, अच्छा साड़ियां बोल देते हैं, मोस्ट साड़ीज हर हस्बैंड बाइज फॉर हर आर ब्यूटिफुल। जो साड़ी वो खरीदते हैं इनके लिए बड़े सुंदर होते हैं, सुंदर सुंदर साड़ियां खरीदते हैं, राइट? However, a lot of men don't have good taste in sarees, you know. Yeah, they don't have good taste. They just नहीं उनको समझ में आता. When they look at a woman in a sari, then they realize the sari is good, you know? Yeah. Otherwise, when the sari is there at the shop, at the counter, they can't really realize whether it is beautiful or not. A lot of husbands are seen, मेरे को समझ नहीं आ रहा. Okay, fine. Most single women I know want a boyfriend. Recording will be available. Watch the recording, revise, and then write similar sentences. Most single women I know want a boyfriend, but I love being on my own. But I love क्या? मुझे क्या अच्छा लगता है? Being on my own, अकेले रहना. On my own means अकेले. On my own means अकेले. On my own, alone. On my own means alone. On my own. Look at the spelling. On my own. On my own. On my own means alone. Okay? बोलो मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है. I like being on my own. I like being on my own. Do you like being on your own? All the time or sometimes? Sometimes. I understand. Not all the time. Nobody likes being on their own all the time. चलो ठीक है, बोलो मेरी माँ अकेली है. My mom is on her own. My mom is on her own. Okay. मेरा भाई अकेला है. My brother is on his own. My brother is on his own. Okay. हम होमवर्क अकेले करते हैं. I do my homework. क्या आप अपना होमवर्क अकेले करते हैं? Do you do your homework on your own, or you take help from mummy or papa? Understand? Children, do you do your homework on your own, or you take help from mummy? You take help from mummy? Never. You take help a little bit. Okay. Inaya takes help from mummy, but Ayat does her homework on her own. She doesn't take help from mummy. On her own, on my own, समझ में आ गया? Alone, ठीक है. तो एक बेवकूफ सा एग्जाम्पल जोक ले लीजिए. The employee said to the boss, "Boss, my mother is on her own, so I want to go home early." The boss said, "No problems, please." 1 week later, the employee said again, "Boss, my wife is on her own at home, so I want to go home early." The boss said, "Why? You just stay here, I'll go." Okay, fine. Okay, okay. All right. On my own. On Friday night, I get home at 6:15. On Friday night, I get home at 6:15. देखा, खाली वो 2 लाइन में हम लोगों ने इतना समय बिताया, कितनी प्रैक्टिस की, कितना कुछ सीखा. ग्रोथ है इसको कहते हैं, ठीक है. उतने में पूरी चैप्टर खत्म करी जा सकती थी ट्रेडिशनल तरीके से. बट वी आर हियर टू लर्न टू फील इंग्लिश. कोई वर्ड्स इधर उधर हो जाए तो क्या फर्क पड़ सकता है मीनिंग पे, राइट? चलिए. ऑन फ्राइडे नाइट आई गेट होम एट 6:15. गेट होम, प्लीज यूज द हाइलाइटर. गेट होम. गेट होम मतलब बेटा घर पहुंचना, घर आना. ओके. ऑन फ्राइडे नाइट आई गेट होम. स्कूल आना, स्कूल पहुंचना. गेट टू स्कूल. गेट स्कूल नहीं, गेट टू स्कूल. लेकिन घर आना, घर पहुंचना, गेट होम. पापा 6 बजे घर आते हैं. पापा गेट्स होम एट 6. पापा गेट्स होम एट 6 every day. पापा गेट्स होम. ओके. कम अगेन. इसका जवाब कुछ समय बाद देते हैं. अभी खाली आदत डाल लीजिए इस चीज की. एक टाइम आएगा जब बहुत अच्छे से इसका आंसर समझ आएगा. अभी जवाब देंगे, हाफ ऑफ द क्लास विल अप्रिशिएट द आंसर एंड हाफ ऑफ द क्लास विल से कुछ समझ में नहीं आया उतना. बट आंसर क्या है कि हमें बोलना क्या है? गेट होम. गेट होम मतलब घर पहुंचना, घर पहुंचना. गेट होम.
और पटना पहुंचना, गेट टू पटना, गेट टू, हम 2 बजे पटना पहुंच गए थे। आई गॉट टू पटना, पास्ट टेंस, आई गॉट टू पटना एट 2 o'clock। ओके, जब पटना पहुंच जाना फोन करना, कॉल मी व्हेन यू गेट टू पटना, कॉल मी व्हेन यू गेट टू पटना। गेट टू समवेयर मतलब कहीं पहुंचना, ओके, बट घर पहुंचना, गेट होम, ऑलराइट। क्लास आना, गेट टू क्लास, ओके, यस। ऑन फ्राइडे नाइट आई गेट होम एट 6:15। फ्राइडे नाइट को कितने बजे घर पहुंचती हैं? On Friday night, Miranda Hart gets home at 6:15 from work at the BBC. From work at the BBC. Now, this sentence also tells you where she works, right? Tell me, where does she work? She works at the BBC. She works at the BBC. Where does she work? At the BBC. So she gets home at 6:15 on Friday night, okay? And makes a hot chocolate. She makes a hot chocolate is a drink. You make this drink with the mixing chocolate to milk. All right. Hot chocolate. It is a very, very popular drink with children. Children love this drink. And if you have never tried, try it tonight, maybe, and you will like it very much. Buy dark chocolate. To make hot chocolate, the best chocolate is dark chocolate. So she makes a hot chocolate. She watches TV for an hour. She says, I watch TV for an hour. हम लोग बोलेंगे, she watches TV for an hour. She watches TV for an hour. 1 घंटे टीवी देखती हैं. She watches TV for an hour. Okay. She watches TV for an hour. All right. अभी मैंने कहा था she doesn't like watching TV. आपको कैसे पता कि मुझे कैसे पता that she doesn't like watching TV? Next line पढ़ना. I wait for the rush hour to finish. वो टीवी देखती, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि टीवी देखना पसंद नहीं करती. It's not her favorite thing. It's not her. She doesn't like it very much. अगर पसंद नहीं करती तो नहीं देखती. But she doesn't like it very much. Then why does she watch? She waits for the rush hour to finish. She waits for the rush hour to finish. Rush hour, what is that? In the morning, at about 8 o'clock, 9 o'clock, everybody is going to work. In Patna, Mumbai, Delhi, big cities, everybody is on the road at about 8:30, 9 o'clock. Children are going to school, parents are going to work, and the traffic is really slow, really bad in that 1 hour. So that is called rush hour, okay? So rush hour means a time in the morning and a time in the evening when everybody is on the road because they are going to work or coming home. In the evening, people are coming home from office. So that is also the rush hour. Rush hour is clear? So आप अवॉइड करते हैं 9 बजे वाली बस, 8 बजे वाली बस पकड़ना, क्योंकि फंस जाते हैं आप रश आवर में. सुबह वाली बस पकड़ लेते हैं, पटना जाना हो तो 4-5 बजे तुरंत पहुंच जाए, 2 घंटे, राइट? सो शी वेट्स फॉर द रश आवर टू फिनिश. अब इस सेंटेंस में कोई भी इंग्लिश सेंटेंस ऐसे 5-6 वर्ड से ज्यादा हो जाए तो उसमें एक दूसरे का कनेक्शन देखो, एक वर्ड का दूसरे से क्या रिश्ता, कैसे काम कर रहा है वो देखो. है एक वर्ड है आई, तो आई वेट है, तो वेट कौन करता है? आई करता है, आई वेट. चलो, एंड किस, अब वेट करेगा तो किस चीज का वेट करेगा ना, तो किस चीज का वेट कर रहा है? तो रश आवर का वेट नहीं कर रहा है, रश आवर के फिनिश होने का वेट कर रहा है, रश आवर के खत्म होने का वेट करना है यहाँ पे. आई वेट फॉर द रश आवर टू फिनिश. आई वेट फॉर द रश आवर टू फिनिश. खत्म कौन होगा? रश आवर, उसी का वेट करते हैं. बारिश हो रही है, आपको बाहर जाना है, तो आप भी वेट करते हो किस चीज का? बारिश के रुकने का. तो बारिश किसके जगह जाएगा? वेट के जगह कि रश आवर के जगह कि फिनिश के जगह? रश आवर के जगह. और रुकना का इंग्लिश स्टॉप होता है. स्टॉप कहाँ जाएगा? वेट के जगह कि रश आवर? यही कनेक्शन होता है, यही सोचना अपने दिमाग में. चलिए बोलिए कि हम बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं. आई वेट फॉर द रेन
to stop. I wait for the rain to stop, right? When I don't have an umbrella, I wait for the rain to stop. But when you have an umbrella, you don't need to wait. You can go in the rain as well if you have an umbrella, right? चलो, आप लोग यहाँ आते हो और फिर किस चीज का इंतजार करते हो? सर के आने का। सर के, अब सर कहाँ लिखेंगे और आना कहाँ लिखेंगे? आप खुद देख के बताओ सेंटेंस में। अरे यार, यू गाइज आर वेरी गुड। अपने आप को बेमतलब में झिझक महसूस कराते हो। यू गाइज आर गुड। मेनी टाइम्स आई हैव नोटिस्ड आप अच्छा पकड़ते हो बातों को। बट देन जब बोलने की बारी आती है, यू गाइज हेजिटेट। आई डोंट नो व्हाई। परहैप्स पब्लिक स्पीकिंग बिकम्स अ फियर। इतने लोग के बीच बोलना होता है एंड यू फील अ लिटिल नर्वस, राइट? चलो, बट यू गाइज लर्न वेरी फास्ट। गुड। यू वेट फॉर द टीचर टू कम एंड स्टार्ट द क्लास, right? You guys get here at about 3:30 and you wait for a few minutes for me to come and start the class. And then I come at about 3:50, 35, 3:36, 3:37, right? Okay, you wait for the teacher to come now. All right. A lot of women love cereals, okay? And they look at the time, cereal time it is. And they quickly finish their work and sit at the TV and wait for the serial to start. Wait for the serial to start, right? They finish their work and they sit there in front of the TV and wait. हाँ 5 मिनट, हाँ 10 मिनट और अच्छा. They wait for their serial to start. Okay, fine. Remember the movie Dabang? In the movie Dabang, Salman Khan says to the girl, I want to marry you. Okay? हम आपसे शादी करना चाहते हैं। नहीं, आपसे नहीं बोलता, तुमसे, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं. And the girl says, my father will be alone if I get married, so I can't marry you. I can't marry anybody as long as my papa is alive. As long as my papa is living, I cannot marry anybody. तो फेमस डायलॉग बोलता है, बुड्ढे के मरने का इंतजार करना होगा. ओके, यही लाइन बोलता है वो. कितना घटिया है. किसने कैसे बोलते हैं? तो बुड्ढे के मरने का इंतजार करना होगा एंड ही इज द हीरो. ही इज द हीरो. अब लड़के ऐसे ऐसे हीरो को देखेंगे तो अभी अपने ससुर के बारे में ऐसे ही बोलेंगे, बुड्ढे के मरने का इंतजार करना होगा. अरे जैसे तेरा बाप वैसे लड़की का बाप, राइट? शो सम रिस्पेक्ट. मजाक में शादी होने के 10 साल बाद आप एक दूसरे को कुछ बोलते हो, दैट्स ओके. बट शुरुआत में आप उसके बाप को बुढ़ा बोल रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर दबंग. मेरे जैसा मिल जाए उसकी दबंगाई निकाल देते. ठीक है, उसकी मूछ निकाल कर उसके हाथ में दे देते हम. ऐसे भी नकली थी मूछ उसकी. ऑलराइट. गाइस, उसने इंग्लिश में कैसे बोला था? ओके, सो आई विल वेट फॉर द ओल्ड मैन टू डाई. आई विल वेट फॉर द ओल्ड मैन टू डाई, राइट? मरने का इंतजार करेंगे उसका. ओके, फाइन. तो वेट फॉर समबॉडी टू डू समथिंग. शाम होती है, सैटरडे शाम, पता है निकिता को कि हस्बैंड आने वाले हैं, राइट? राइट गाइस, निकिता पक्का भाग जाएगी कि अब नहीं झेल सकते. हर दूसरा सेंटेंस मेरे बारे में. नहीं, गलत बात है, और भी लोग हैं, लेकिन कोई शादीशुदा नहीं है बेटा, दिक्कत ये है. ठीक है, कोई और शादीशुदा सीक्रेटली मैरिड? हाँ, कौन? अरे, ओ आई हैव गॉट समबडी. अब आपका से लोड हट जाएगा, टेंशन मत लो. ओके, somebody is here to share the burden. ठीक है, लेकिन ये पूरा कर दूं. So on Saturday evening, she knows husband आने वाले हैं. So she gets ready, does her makeup and everything, and waits for her husband to come home. है ना? She waits for her husband to come home. Okay, you tell me, your name is Aman. Aman, does your wife wait for you in the evening to come home? All the time. Oh, lovely. Okay. His wife waits for him to come home. Yeah, newly married wives do. They wait for their husbands to come home. And after 5, 6 years, nobody does. They're too busy with other responsibilities, the children and all. Okay. Yeah. Yes, Afo? What did you say?
Like my wife. Oh, I wait for her to come home because she goes out to work. I don't. I stay at home. She goes to school. So I wait for her to come home. I wait for her to come home and give me my meal. All right, fine. She waits for the rush hour to finish and then drive out of London. तो जैसे आप कोई वर्ड बोलोगे, वेट बोलोगे, तो वेट बोलने के बाद आपका दिमाग कहेगा किसी का इंतजार करना है, तो किसी के कुछ करने का इंतजार करना है. एक लड़का बोला जिंदगी भर इंतजार करेंगे तुम्हारे हाँ बोलने का. कैसे बोला उसने? I will wait for you forever to say yes. Wait for somebody to do something. है ना? To finish. तो यहाँ I will wait for you forever to say yes. आपका हमेशा इंतजार करेंगे जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे. To say yes, right? तो आप लोग ये सब सेंटेंसेस जो भी मैंने एक्स्ट्रा डिटेल दिए है, एक्सप्लेन किया है, you guys try and make similar sentences at home. It's important, okay? And as I know now in the group, you messaged about that money thing that you are collecting, okay? Extortion nahi hona chahiye, okay? That bachche can't bring and you're saying, lana padega. Okay, don't do that, okay? If they are happily contributing, fair enough. And if they can't, we accept karo, okay? Chalo, they are not able to. And where else? So I think last line I will just say, then drive out of London. फिर drive करते हैं out of London. कैसे जाती हैं बाहर वो? यानी कार से जाती होंगी. कैसे पता हमें? She drives out of London. She drives out of London. अगर वो बाइक से जाती तो कहते she drives out of London, नहीं बोलते, ठीक है? She rides her bike out of London, ऐसे बोलते. She drives out of London. I hate driving in a lot of traffic. She hates driving in a lot of traffic. If I say I hate rasgullas in the morning, does it mean I hate rasgullas? I like rasgullas, but not in the... So she hates driving in a lot of traffic. So please do not misunderstand this sentence. There was a question. Does she like driving? The answer is yes, but not in a lot of traffic. I hate driving in a lot of traffic. Chalo. We will finish it the day after tomorrow because I don't think we will be able to study tomorrow. Do you guys plan to study tomorrow? You want to study? Tabrez and Sajid are saying yes, sir. No? I know. Sometimes I tried that okay, first we'll have the celebration and then we'll study. But it's so difficult. The excitement in the room and everything, it just makes it difficult to continue teaching, So I don't think we will conduct the class tomorrow. There will be no teaching tomorrow. We will meet at 3:30 for some time, right? For the at 3 o'clock for the celebration. We will have the celebration for a few hours now, maximum 1 hour, okay? And then we will leave. 2 hours. Okay. 3 to 5. Okay, 3 to 5. Fine. So let's wrap up for today, guys. I hope you will not forget to practice tonight, every sentence that you learned. And I'll see you guys tomorrow. Bye-bye, everybody. Take care.